Good morning, students. I hope you are doing good. So now, from today, beta, we have to understand inventory valuation illustrations first. So before starting any session, beta, first you can recall all basic rules of accounts. So if you remember that traditional approach and modern approach, traditional approach talks about debit the debtor, credit the creditor, debit the receiver, credit the giver, debit what comes in, credit what goes out for real account and nominal account. जल्दी पूरे रूल्स ऑफ अकाउंट्स को याद कर लेते हैं फटाफट फटाफट फटाफट. आफ्टर दैट बेटा मॉडर्न अप्रोच एसेट डेबिट बैलेंस लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस एक्सपेंसेस डेबिट इनकम क्रेडिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस. So my dear friends, when we started our journey of the CA foundation, we started with the journal ledger trial balance P&L. Balance sheet is our financial statement. So financial statement consists of P&L and balance sheet where we have to reach. Okay. And for that, we need some recording of transactions, and recording of transactions, we are doing it with the help of journal or subsidiary books. And after that, beta, we are going to do posting part in ledger. That is the summary of all accounts. Okay. And trial balance is a summary of your debit and credit balances. So this is for arithmetical accuracy. We are doing the trial balance, and from that we are going to prepare P&L and balance sheet. But beta, sometimes you may make mistake, and therefore mistakes are rectified in the chapter which is called as rectification of errors. Okay. So मेरे प्यारे बच्चों, बेटा जल्दी से याद कर लो सभी बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंट्स. और हिंदी वाले जल्दी 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 बेटा क्या करना है आपको, एंट्रीज को याद करना है. सो बिफोर स्टार्टिंग टुडे सेशन बेटा, फर्स्ट वी विल रिकॉल सम एंट्रीज. तो हमेशा रिविजन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जितने भी बच्चे बेटा रिविजन्स को फटाफट कंप्लीट कीजिए. हमारे कुछ रिविजन्स में देख रहा हूं स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस बेटा. यस, जल्दी से आज इसके क्वेश्चंस कीजिए. अप टू रिवीजन है. सो रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹10 lakhs. 5 सेकंड दूंगा हर एंट्री को याद करने को. एवरी एंट्री 5 seconds. कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल और बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल. बॉट गुड्स फॉर कैश. परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश. ड्रू कैश फ्रॉम द बैंक. बैंक में से पैसा विड्रॉ किया. कैश कम्स इन एंड बैंक इज अ गिवर. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट. क्रेडिट पे कृष्णा को माल बेचा. उधारी है तो बंदे का नाम आएगा. कृष्णा अकाउंट विल बी ओपन अंडर द हेड डेटर्स. सो क्या एंट्री होगा सर? कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. यस डियर. आफ्टर दैट bought goods from Sham on credit. Bought goods from Sham on credit. क्रेडिटर होगा श्याम से गुड्स परचेस किए, उधारी पे किए. सो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट. रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 1,45,000 and we allowed him a discount. It's our loss. This discount is our loss. So cash or bank account debit, discount allowed account debit to Krishna. Okay, so cash मिला है, discount allowed is a loss. Paid Sham cash rupees 2,15,000 and discount allowed 10,000. So Sham account debit to cash to discount received. Cash sales for the month. Cash account debit to sales. Paid rent account debit to cash. And salary paid, salary account debit to cash. Yes. So my dear friends, I hope you recall all these entries. And now beta we are going to do inventory valuation. So चलो जल्दी से inventory valuation को start करते हैं. So friends,
इज इट पॉसिबल बेटा कि आप सभी एंट्रीज को याद कर दिए? हाउ मेनी एंट्रीज यू गॉट करेक्ट बेटा? हाउ मेनी एंट्रीज? यज्ञेश खत्रानीची, सर कुछ तो मोटिवेशन दे दो। आज का मोटिवेशन लाइन बड़ा एक नई लाइन है। फर्स्ट यू लर्न फ्रॉम मी, यू स्टडी फ्रॉम मी, एंड देन यू स्टडी इट, एंड देन बेटा यू रिकॉल इट। ओके, और आपको खुद को ग्रो कीजिए। सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग इज अ बेटा आज का सेंटेंस। ओके, आज सब करेक्ट हुआ? ऑल राइट एक्सेप्ट वन, ऑल ऑफ दिस सर, ऑल ऑफ दिस। यस बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। सी बेटा, CA is a course in which you have to regularly recall previous point, and your teacher, your mentor, okay, like me, we are there to take your revisions. So whenever, if you miss the revision, beta, then it will be very difficult. You just don't keep on learning. You have to study also, and then you have to recall it also. Okay. So याद रखो। यस, सभी स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी स्टूडेंट्स एक प्रॉपर रिकॉलिंग कीजिए, एक रिविजन्स का एक शेड्यूल बनाइए। एंड बेटा, नाउ वेरी फ्यू मंथ्स आर लेफ्ट, सो डोंट लिसन टू एनीवन, ओनली फोकस ऑन योर स्टडी मटेरियल। गुमराह करने वाले बहुत लोग हैं, विच विल टेक यूर सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, दे विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। बट रिमेंबर, स्टडी मटेरियल का इफ यू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद इन टाइम, तो बेटा आपको इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो सीए फेल करेगा। ओके, सो कीप स्टडिंग फ्रॉम स्टडी मटेरियल। ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ स्टडी मटेरियल इज इंपॉर्टेंट वन। यस, ठीक है, चलिए। हाउ टू डू रिविजन इन अकाउंट्स? कंपल्सरी 100 पेजेस का बुक, 100 पेजेस का बुक यू मेंटेन विथ योर सेल्फ। भिड़े भिड़े विल टेक डिसीजन। यस, सो 100 पेजेस का बुक बेटा। चलिए, अभी व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ certain questions of study material, first in first out. So I will take some questions of first in first out. स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस है बेटा। बेटा पहले प्रीवियस लेक्चर देख दिया, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड टुडे सेशन। मैं आज सम लेना चाहता हूं, आई विल टेक दिस सम। हाँ जी, सेकंड इलस्ट्रेशन विल डू इलू टू, इलू टू बेटा। Write down on rough pages and then you can take screenshot of 400 pages book. So बेटा open your rough pages बेटा, rough pages open कीजिए। हाँ बेटा, लास्ट क्लास में कुछ टेक्निकल एरर के वजह से हमारा क्लास रह गया था। सर आई हैव ज्वाइन फॉर द फर्स्ट लाइव सेशन। वेलकम कुणाल बेटा, वेलकम। चलिए, सो इलस्ट्रेशन 2 पे आ जाइए बेटा, इलस्ट्रेशन 2। लेट्स स्टार्ट इट क्विकली। अ मैन्युफैक्चरर हैज द फॉलोइंग रिकॉर्ड of purchases of condenser, of purchases of condenser. Okay, yes, I know now 11 12th के एग्जाम्स बहुत पास में आए हैं। So those students who are studying for 11 12 standard beta, you please manage your schedule. You have to focus on your 12th standard first and then on the CA course.
Yes, I remember. चलिए. A manufacturer has the following record of a condenser: December 4, December 10, December 11, December 19, and December 28. See, please write it on the rough page first. 1600 units were in the month issued till 18th December. 18 December. So, beta, first in, first out. So, how to prepare this? First, we will try to understand rough working. Rough working. Actually, this is not allowed in India in exam. Sorry. Rough working is not allowed in exam. India क्यों आया पता नहीं. Okay. But remember, this is only for your conceptual clarity. Okay. Date. How many columns we are going to prepare? Rough working में quantity and rate, issue and balance. My dear friends, we won't use this method for exam. This is only for understanding. एक बार हिंदी में भी बताऊंगा बाद में. Once I will explain it in English and then I will explain it in Hindi. Don't worry. So South Indian students, first for you. So my dear friend, on 4th December, we have 900 quantity. We bought it at 50 rupees. 900, we bought it at 50. December 10th, again 400 quantity we bought for 55. But those students who do not have background of accounts can solve this question. It's very simple. 900 quantity received हुई, 400 quantity we received. First quantity 50 rupees. Then after that, beta, same material we bought it at 55. Rate difference. 11 December, 300 quantity we bought it at 55. And there is issue 1600. Issue कितना है बेटा? 1600. First in, first out. 900 issued. 1600 मतलब lot 1, lot 2, lot 3. Again deducted 400, again deducted 300. So 1600 lot 1 से हुए 900. Lot 1, 2, 3. And we have finished with all 900, 400, 300 lots. So 19 December, 200, 60 rupees. And 20th December, 800, 47 rupees. So balance 200 and 800. So this is my rough working. So my issues. What are my issues? Issued कितना मैंने withdraw किया? 900 at rupees 50. 400 at 55. And 300 at 55. Use memory plus का function. Take on calci. 900 into 50. Then beta press M plus 45,000. 400 into 55, M plus 22,000. 300 into 55, M plus 16,500. And then just press memory recall and you will get the answer 83,500. What is my closing balance, my dear friends? 200 at rupees 60 and 800 at 47. So my dear students, memory 0 karo. 60 is 12,000. 800 into 47. 49,600. So my closing stock 49,600 and my issues 83,500. Let's check the answer.
49,600 is my closing balance. यस, देखो कुछ नहीं करना है, इज वेरी सिंपल. क्या करना है देखो, 900 सिवा, वन मोर टाइम, एक बार हिंदी में. डेट, रिसीट. बड़ा इसमें आप दो कॉलम बनाओगे, क्वांटिटी, रेट. इट्स अ रफ वर्किंग. इशू एंड बैलेंस. सबसे पहली डेट 4 दिसंबर, कितने में खरीदा बेटा? 900 क्वांटिटी. आपने 50 रुपए से खरीदा, वेरी सिंपल, एक लाइन छोड़ दिया. 10 दिसंबर, 400 मैंने कितने में खरीदा? 55. और 355, 11 दिसंबर. फिर क्या हुआ, मैंने इशू किया. कितना इशू किया सर? इशू किया टिल 18 दिसंबर, 1600. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो इसमें से 900 जाएगा, इसमें से 400 जाएगा, इसमें से 300 जाएगा. लॉट वन से पहला जाएगा, फिर लॉट टू, फिर लॉट थ्री. 1600 ओवर. यस सर. फिर क्या हुआ, 19 दिसंबर 200, एंड 28 दिसंबर 800. 60, 47, 200 एंड 800. बैलेंस 200 एंड 800. सो 200 एंड 800. यस. सो 200 एंड 800, 60 एंड 200 इंटू 60 प्लस 800 इंटू 47. सो मेमोरी प्लस का फंक्शन वी आर गोइंग टू यूज. सो 200 इंटू, हम लोग 60, 12,000, और बेटा आपको 800 इंटू 47, दोनों से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द आंसर. आपको आंसर मिलेगा 49,600. ये अपना क्लोजिंग बैलेंस है. सो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 2. वेरी सिंपल. अभी हम लोग आएंगे इलस्ट्रेशन 3 पे. इफ इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, if issues are different, issues are on different date, December 5, December 20, and December 29, what will be your answer? By using LIFO method and FIFO method, both से करेंगे. FIFO से will be the same answer. अभी लास्ट इन फर्स्ट आउट से करेंगे. हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर बेटा? डेट, रिसीट, क्वांटिटी रूपी, क्वांटिटी, रेट, इशू, बैलेंस. सी, 4 दिसंबर नंबर ए, 5 दिसंबर you can write number B. Sequence, date wise sequence, A, B. Then you have C, next date is 20, so C. Then next date is 11, D, 19, E. Then F is 20, G 28, and H 29. So A, B, C, D, E, F, G, H. We have maintained the sequence date wise. हमने क्या किया? डेट वाइज सीक्वेंस किया. देखो 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद हमने C नंबर दिया 10 तारीख को, फिर 11 तारीख को, 11 के बाद हमने 19 को तारीख दिया, 19 के बाद 20, 20 के बाद बेटा 28, 28 के बाद 29. तो हमें सीक्वेंस को बरकरार रखना है. डेट वाइज हमें सीक्वेंस से जाना है. हमें क्या करना है? सीक्वेंस से जाना है. ओके, देखिए अभी 4 दिसंबर, 950 रुपीज. फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट में December 5, December 5 इशू. हाउ मेनी इशूज? 500. Last in first out, we have only one lot. We have only one lot. So 500. ओके, कैलकुलेटर ट्रिक वापस बताइए, ऐसा बोल रहे हैं कुछ बच्चे. यस, कैलकुलेटर ट्रिक वापस बताऊंगा बेटा. 5 दिसंबर 500 हुआ. आफ्टर दैट
10 December 400 क्वांटिटी, वी बॉट इट एट 55. ओके, सी. 11 दिसंबर डी है 355. देन 19 December 260. Easy. Now after 19 December you have 28 December 600. Now 28 December 600 last in first out. So 600 issue करने हैं. So we will issue first out of this 200. 600 में से 200 गए, लास्ट इन फर्स्ट आउट. सो 19 December ओवर, बैलेंस 0. आउट ऑफ नाउ रिमेनिंग 400. 400 में से 300 गए, ऑल 300 0. सो 200 गए, 300 गए, एंड यू लेफ्ट विथ 100. 100 इसमें से जाएंगे, 100 इसमें से जाएंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट. उसके बाद रिसीट 847. 19 December के बाद 28 December 847. And then last is 29 December 500. लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसमें से 500 जाएंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट. सो 800 में से 500 गए तो 300. 400 में से 100 गए तो दिस इज ऑल्सो 300. एंड 900 में से 500 गए तो दिस इज 400. सो व्हाट इज माय इशू टोटल? इशू का टोटल 500 into 50 प्लस 100 into 55 प्लस 300 into 55, 200 into 60 and 500 into 47. See beta, you have to use memory plus function because we want summation. memory plus कैसे यूज करना है देखो, 500 into 50 memory plus, because plus है तो memory plus. 100 into 55 m plus. 300 into 55 m plus 16500. 200 into 60 m plus and 500 into 47 m plus. And memory recall MRC I'm getting the answer 82,500. How much answer I'm getting beta? 82,500. 82,500. And what is my closing balance? Closing balance is beta 400 into 50, 300 into 55 and 300 into 47. And memory recall में आएगा बेटा ये. चलो जीरो करो. See whether there is no M on your calci. M नहीं है. M means memory. There is no memory. 0 is a memory. 400 into 50 M plus, 300 into 55 M plus, and 300 into 47 M plus. Memory recall 50,600. What is the balance? 50,600. Are you getting the same answer, beta? 50,600? Yes. Closing balance 50,600. Issue balance 82,500. Now you got the concept, beta. Calculator technique, M plus button, M plus, and then memory recall. This is a button. Memory recall. Yes. But in exam, beta, we cannot present in such a way. Exam presentation is different one. Yes. कुछ नहीं है. खुशाविन core is very simple. जस्ट मेमोरी प्लस का फंक्शन यूज करना है. कौन से लॉट में से गया बेटा? प्लीज
प्लीज फोकस बढ़ाइए, प्लीज फोकस बढ़ाइए। इज वेरी सिंपल। ओके, सो डेट, exam presentation, write down now. Receipt, first try to understand column. Quantity, rate, amount. Then issue, again column. Quantity, rate, amount. And balance, beta, this is exam presentation. Quantity, rate, amount. Now you can draw. Scale लीजिए. 12 lines, half page. Quantity, rate, amount, quantity, rate, amount, quantity, rate, amount. हर्ष मिश्रा बोल रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो बड़ा कोर्स ही कॉम्प्लिकेटेड है, समझ लो फिर। इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है भाई? कोई साइंस का भी बंदा बता देगा कि ये कितना सिंपल है। कितना क्वांटिटी आया और कितना क्वांटिटी जा रहा है बेटा, ये नहीं बता पा रहे हैं हम लोग सीए कोर्स में। हाँ, ये नहीं बता पाएंगे डेट वाइज सीक्वेंस। मतलब हद है यार, ये बच्चे कर सके ये मैं दक्ष भी कर लेगा बेटा। दक्ष फोर्थ स्टैंडर्ड में, उसको भी समझेगा। हद है। ये कॉम्प्लिकेटेड लगा तो हद है भाई। चलो, सो ड्रॉन, राइट डाउन बेटा ड्रॉन करके। यस बेटा, फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए। टेल मी फॉर्मेट ओवर, टेल मी फॉर्मेट ओवर। ड्रॉन। बेटा ये मत गिव अप कीजिए ना, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बच्चा बच्चा करेगा। 4 December, 950. What is the amount? 45,950. December 4 के बाद कौन सी डेट आएगी बेटा? 5 December. राइट डाउन। हाँ, सो बैलेंस इज, यू हैव नाउ 900 क्वांटिटी ऑफ 45,000। स्किप वन लाइन, एक लाइन छोड़ दीजिए। 5 December. नाउ ऑन 5 December बेटा, व्हाट इज द इशू? इशू इज 500। चलो लीजिए, 500 इशू। व्हाट इज द रेट? 50। एंड 500, 5 5 are 25. So out of 900 beta, 500 quantity gone, 450.
we left with 450 rupees. Now what is the next lot, beta? 10 December. Always tell to yourself, it is very easy. It's very easy. It's very easy. I can do it. Whatever the beta, whatever the hard thing you are doing. For example, though we are not a technical people, but tell to yourself, editing is very simple. Coding is very simple. Though we are not science background people, but don't say it's not my cup of tea. हमेशा बोलो रे कि इजी है, इजी है. 10 दिसंबर 400 क्वांटिटी 55. 400 क्वांटिटी 55. लीजिए 400 इंटू 55, 22,000. नाउ बेटा बैलेंस में क्या होगा? ऑलरेडी यू हैव 400 at 50 rupees. Again you will add, sorry beta, 50 by 22,000. So I have now two lots, lot 1 and lot 2. Skip one line, leave one line beta. 11 number, 11 December, 355, 16,500. Now how many lots you have? 3 lots. Starting के 400. Again 400 into 55. This is opening balance. And I bought third lot, 300 into 55, 16,500. तो पहला लॉट 400 का था, दूसरा लॉट 400 का, तीसरा 300 का. Is it difficult? Not at all. 19 December. Next date, after one line, 19 December. 200 at 60 rupees. 12,000. Now how many lot you have? अभी आपके पास कितने लॉट्स हैं? 3 पहले के, एक अभी का, 4. 400 into 50, 20,000. 400 into 55, 22,000. 300 into 55, 16,500. And lot 4, 200 into 60, 12,000. So I have 4 lots. अभी फोर्थ लॉट में से 20 तारीख 600 गया. कितना गया? 600. लास्ट इन फर्स्ट आउट 600. तो इसमें से पेंसिल, टेक पेंसिल बेटा, पेंसिल लीजिए. -200, -300 and -100. So 600 last in first out, last to first. So -200, -300 and then -100. इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? लास्ट इन फर्स्ट आउट. जो लास्ट में आया उसको पहले आउट कर दीजिए. तो 200 में से जाएगा, 300 में से जाएगा, 400 में से 100 जाएगा, 600 हो गए. सो इशू 20 दिसंबर. कितना इशू किया? 200. सॉरी इधर से करो, 400 में से 100, तो 100 at 55, 5,500. 300 is also at 55, 16,500. And last वाला 200 into 60, 12,000. So what is the balance that you left with? Balance पहले लॉट का 400 as it is, and 400 में से 100 गया, तो 300 at 55, 16,500. So I left with lot 1 and lot 2, lot 3, lot 4 over. Easy. 20 December over.
क्या रे? 28, 800 into 47, 28 December, 800 into 47, 37,600. Now I have already 400 at 50, 20,000, 300 at 55, 16,500, and 800 is a new lot, 47, 37,600. Is it difficult? Not at all. Not at all. 20th December. And what is the last date? 29th, 500 lot में से गया. 29 December. 500 is from last in first out. तो 500 में से 47 गया. 500 into 47, 23,500. So 400 into 50, 20,000. 300 into 15, 16,500. And I left with 300 into 47. Three hundred into 47, 14,100. 14,100. So my total is 50,100. I left with 300 into 47, 50,100. Is it difficult? Is it difficult? Four hundred, 300, and 300. Last in, first out. By pencil you can do it. क्या है? बच्चा बच्चा करेगा भारत का. काजल बेटा लेंदी तो होगा ना बेटा. 8 मार्क के आपको इंस्टीट्यूट ऐसे ही दे देगी क्या? सीए कोर्स कर रहे हो भाई. लेंदी क्यों नहीं होगा? थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा ना बेटा सीए कोर्स में. क्या आपको वन लाइनर के क्वेश्चन दे? ठीक है, कोई बात नहीं. मुझे ऐसा लगता है ना कि एवरी स्टूडेंट ऑफ आईसीआई क्लासेस कैन इजीली सॉल्व दिस. भाई कुछ है ही नहीं सर इसमें. क्या है? 900 आया, 400 आया, 500 गया, 400 आया, वापस 400 आया, 400 400 के दो लॉट, वापस 300 आया, 400 400 300, वापस 200 आया, 400 400 300 200. अरे खरीदना है भाई. फिर 600 गया. अरे पहले लास्ट इन फर्स्ट आउट 200 को एम्प्टी कर. उसमें से माल निकाल रहे 300 में से. चल ऐसा बोलने का. 200 में से खत्म कर चल पहले. 300 में से खत्म कर. 100 में से खत्म कर. चलो 400 में से खत्म कर. 400 का कितना बचा? 400 का 400. 400 में से कितना गया? 100 गया. 300 बचा. सर लास्ट इन फर्स्ट आउट इंडिया में नॉट अलाउड. बट एटलीस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग वी मस्ट नो दैट what we are learning. In India, we allowed only FIFO and WA, weighted average. FIFO, first in, first out. According to question, बेटा, if suppose 8 marks का question है, तो you allot 1.5 minutes, 12 minutes for one question. Okay. Okay. 8 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन, 5 मार्क, 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा.
Yesterday, beta, I will tell you, one of my chef, he told me, sir, he told me, practically, I will teach you, practically. See, beta, milk के ऊपर there is expiry date. Every milk packet, it has beta expiry date. So suppose expiry date is 29th Jan. Then beta next packet पे 30th Jan. Next packet पे 1st Feb. So first, which packet you are going to use? Suppose you have these 10 packets, these are 20 packets, these are 15 packets you bought. So expiry date are 29 Jan, 30th Jan and 1st Feb. Milk is similar, na beta? You can use any packet. But now which packet you will use first? Tell me. If expiry date is 29 Jan, 30th Jan and 1st Feb. Suppose मुझे 40 पैकेट्स चाहिए. I am using 40 packets. So which packet beta I will use first? Expiry date is written 29 Jan, 30th Jan and 1st Feb. तो पहले कौन सा पैकेट मैं यूज करूंगा? ठीक है सर, कॉमन सेंस है सर. 29 Jan, first in first out. Then out of this 20 and out of this 10. So I left with 0, 0 and 1st Feb का 5. Simple. When beta there are products which are similar. तो but obvious. अभी सपोज आपने पोटैटो लाए, पोटैटो मिक्स कर दिए, 2 लॉट में लाए. पहले पुराना लॉट यूज करोगे, बाद में सेकंड लॉट, फ्रेश लॉट. नहीं तो खराब हो जाएगा ना बेटा वो. इट गेट स्पॉइल्ड. सो पोटैटो मिक्स मत करना, लॉट्स को थोड़ा अलग अलग रखो. ये लॉट पहले यूज करो सब्जी में, फिर दूसरा लॉट. फ्रूट्स का भी वैसे ही. बट बेटा ओनियन होता है ना, ओनियन, आपको एक चीज बताता हूं. ओनियन जितना पुराना होता है ना बेटा, उतना उसका प्राइस बढ़ता है. सड़ा हुआ नहीं बोल रहा मैं, एकदम सड़ा हुआ नहीं, पर पुराना प्याज ग्रेवी बहुत भारी देता है. ध्यान में रखना सम टेक्निकल पॉइंट्स. सो ओनियन में नॉर्मली वी आर यूजिंग लास्ट इन फर्स्ट. जो लेटेस्ट स्टॉक लिया ना उसको हम लोग यूज करते हैं, बेच देते हैं, मतलब वो खरीदते. लास्ट वाला स्टॉक रखा तो पैसा अच्छा मिलता है. सॉरी, फर्स्ट वाला स्टॉक. लहसुन कितना महंगा हुआ है पता है आपको? 400 रुपए से हुआ है बेटा अभी. 400 रुपए केजी. रेट्स इतने महंगे चल रहे हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, you have to use first in first out and weighted average in real life. So you have to see the product for which. So there is no compulsion by the institute. You go with the FIFO method. It's your choice. You are management. You will decide which method we have to accept. So FIFO will give the different answer. LIFO will give the different answer. Weighted average will give the different answer. So choice is ours. But AS2 does not allow last in first out method in India. In India, we have only 2 methods. But beta, after becoming a CA, you thought you will do CPA. So CPA allows it, LIFO method. Last in first out allow him. So you should have the knowledge, no? Last in first out, weighted average. Though we are not using it, we are using only
FIFO and weighted average as per AS2. AS2 दो ही मेथड को अलाउ करता है, FIFO and weighted average. For only conceptual clarity, you must have the knowledge of LIFO. LIFO का नॉलेज जरूरी है. यस. हाँ भाई, हाँ भाई, बहुत बढ़िया. बेटा इंस्टीट्यूट ने नहीं बोल दिया लास्ट इन फर्स्ट आउट, बस इंस्टीट्यूट बोल दिया दो ही मेथड यूज करो, FIFO एंड वेटेड एवरेज. माइट भी उस टाइम पे जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे दे हैव टेकन अ डिसीजन. सो S2 ने बोल दिया भाई डोंट यूज दिस, बिकॉज नॉर्मली वी यूज इन इंडिया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही कर देते हैं. ओके. हाँ भाई, आप भी देखो ना, आप रियल लाइफ में सपोज आपके पेन पेंसिल्स है, आपने नया पेन लिया, फिर भी पुराना पेन आप लोग पहले खत्म करने की कोशिश करोगे, रिफिल खत्म कर दोगे, फिर नई रिफिल को निकालोगे. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इंसानी फितरत है बेटा ये. ओके. सब मेथड चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ भाई, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. लिफो मेथड हम लोग फॉलो कर देते हैं, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोहिबिट्स, सो वी कैन नॉट यूज नाउ लिफो मेथड. ओके. प्रीवियसली बिफोर AS2 some people may use the method FIFO, but after AS introduction it won't allowed. Last in first. So beta don't use that method. समझा? एकदम इजी. ठीक है. रिसीट शो नहीं कर रहा ही नहीं बेटा. Assume the following issues were made in previous example. क्या यार, तू पढ़ता ही नहीं है क्वेश्चन. प्रीवियस एग्जाम्पल राजेश कुमार जी, प्रीवियस एग्जाम्पल और ये मिक्स करके आंसर निकालो. हे भगवान. वी आर यूजिंग नाउ weighted average method. Weighted average. Try to understand. Now how to solve weighted average? Write down beta. What is weighted average? First try to understand. What is simple average and weighted average? Beta, I told you the difference, no? Simple average and weighted average. Suppose lot 1, lot 2. Lot 1 500 quantity, lot 2 500 quantity. I bought this at rupees 50 and I bought this at rupees 60. Okay. So now what is my quantity that I have? 1000. Assume nothing is sold. Assume nothing is sold. I will take only the difference of this rate, 50, 50, 55. Average of 50 plus 60. So 50 plus 60 divided by 2. देखो 500 क्वांटिटी थी, रेट का एवरेज लेना into 1000 quantity. My answer is 55,000. Weighted average क्या करता है? 500 into 50. Weights को भी, this is weight, this is rate, 25,000. 500 into 60, 30,000. My rate is 55,000 and 1,000 quantity. 55,000 divided by 1,000. Sir, price is same, 55. Why? Because you considered same quantity, 500 and 500. That's why you are getting the same answer. Sir, थोड़ा change करता हूं. 600 lot 1 and 400 lot 2. 50, 60. Check it now. 600 I bought at 50 rupees. 400 I bought it at 60 rupees. What is the total quantity? 1,000. And what is the total price?
Total price is 30,000, 24,000, 54,000. So 54,000 divided by 1,000. My answer is 54. See, this is the highest quantity. Highest quantity at 50 rupees. High quantity at 50 rupees. So my answer is towards 600 is more. So आंसर मेरा 50 के 55 से कम रहेगा. क्यों? क्योंकि मेरा आंसर टूवर्ड्स 50 होगा. My answer is less than 55. Logic is very simple because my quantity is more towards 50. Let's take opposite example. 450 rupees and 650 60 rupees. Now my answer is more than 55. Why? Because 600 quantity is at 60. Let's check it. 400 into 50. No one will tell you in maths, beta ye cheez. Why weighted average? And 36,000. So my answer is 56,000. And here 1,000. So 56,000 divided by 1,000, answer is 56. More towards 60. 55 से ज्यादा. Simple average 55. Weighted average towards 600 more. So answer is more towards 600. तो ये 60 के towards. Therefore answer is 56. How to calculate? Total cost divided by total quantity. Total cost divided by total quantity. So answer is towards 55 more. Why 60 के towards answer होगा हिंदी में. देखो बेटा, सिंपल एवरेज जो आंसर देता है, सिंपल एवरेज, वो 50 और 50 60 का डिफरेंस, एवरेज 55, 50 प्लस 60 डिवाइड बाय 2. जब आप वेटेड पे जाते हो, वेटेड वेटेड क्वांटिटी को भी कंसीडर करता है. वेटेड क्वांटिटी को भी कंसीडर करता है. वेट, वेट फॉर क्वांटिटी. वेट मतलब क्वांटिटी को वेट दिया जाएगा. सो क्वांटिटी कितनी है? 500. कितने से लिया? 50 रुपीज. 500 60 रुपीज. टोटल कॉस्ट लिया, टोटल क्वांटिटी से डिवाइड किया. सर 500 550 से 560 से, तो आंसर सिंपल एवरेज जितना ही रहेगा. आंसर सिंपल एवरेज जितना ही, मतलब 55 55. बट वेट, अभी मैंने क्वांटिटी चेंज किया. 50 रुपया 600 क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी. 400 क्वांटिटी 60 रुपए से लिया. अभी आंसर में क्वांटिटी किधर ज्यादा है? क्वांटिटी 50 पे ज्यादा है. 600 600. सो मेरा आंसर 50 के टूवर्ड्स झुकेगा. सो मेरा आंसर किधर झुकेगा? 50 के टूवर्ड्स. मेरा एवरेज कितना आया? 55. और 55 से कम रहेगा. कितना आया फिर? 54. वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज 55, वेटेड एवरेज 54. 50 के टूवर्ड ज्यादा झुकेगा. सोचिए ये बात को. 400 एंड 600. 450 से लिया, 660 से लिया. आंसर किधर झुकेगा? 600 के टूवर्ड्स. मतलब 55 से ज्यादा आंसर मिलेगा, क्योंकि 60 के टूवर्ड्स आंसर झुकेगा. सो आंसर कितना आया? 56. क्वांटिटी का कॉस्ट, क्वांटिटी डिवाइड करो एंड टोटल कॉस्ट को न्यूमरेटर में लो. क्वांटिटी डिनोमिनेटर में लो, टोटल कॉस्ट को न्यूमरेटर में लो. आंसर सिंपल एवरेज 55, वेटेड एवरेज 56. 660 600 के टूवर्ड्स आंसर झुकेगा. 600 के टूवर्ड्स आंसर झुकेगा. गॉट द कॉन्सेप्ट? सो वेटेड एवरेज, व्हाट इज द फॉर्मूला वेटेड एवरेज का? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी. यू कंसिडर क्वांटिटी ऑल्सो. आया समझ में? हेल्थ जरा थोड़ी नरम गरम है. अरे समझे क्या बेटा? क्वांटिटी को भी कंसिडर किया तो वेटेड एवरेज. सिंपल एवरेज में सिर्फ प्राइस को कंसिडर करेंगे. हाँ भाई, हाँ भाई, एकदम इजी छे. प्लीज जरा सीरियस हो जाओ, लॉजिकल हो जाओ. सीरियस तो हो आप, लॉजिकल हो जाओ. एंड लाइव क्लासेस में आने की कोशिश करो. ट्राई टू कम इट इन लाइव, बिकॉज रिकॉर्डेड, टू वॉच रिकॉर्डेड बेटा, इट्स वेरी डिफिकल्ट. ओके, यू हैव टू बी वेरी 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 स्पेसिफिक.
यस, चलो। सो लॉजिक ऑफ वेटेड एवरेज अंडरस्टूड। चलो, डेट, राइट डाउन बेटा, डेट। सेम प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सॉल्व, 2 and 3 using weighted average. Date, receipt, quantity, rate, amount लिखो। इशू, क्वांटिटी, रेट कॉलम बड़ा रखो, अमाउंट, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, amount. Take on 2 pages. If your handwriting is big, half page, half page. Very good, Kajal. बेटा ये कोई भी मेथड रियल लाइफ में यूज हो जाती है। आपको वेटेड एवरेज करने, यू कैन गो बाय वेटेड एवरेज। आई विल शो यू द आंसर ना फर्स्ट। विवेक, 50 + 60/2 is a 55. सिंपल एवरेज, प्राइस का डिफरेंस। फॉर्मेट ड्रॉन बेटा, फॉर्मेट ड्रॉ कर ली दो। यस अमर्त्य, यू कैन टेक ऑन हॉरिजॉन्टल पेज। प्लीज गाइस, लिसन माय वर्ड्स। लास्ट में रोना आएगा, फिर बोलना मत सर ने आगाज नहीं किया था, सर ने वार्निंग नहीं दिया था। यदि आप लोग थोड़ा भी लिंक ब्रेक करोगे, 100 में से 20 ही बच्चा पास होने वाला है। उसमें से 10 बच्चा प्रीवियस अटेम्प्ट का रहता है, 10 बच्चा न्यू अटेम्प्ट का होता है। एक ठोकरे खाके और एक फ्रेश। और सीए फेल होने का रीजन आप ही हो, आपका नाश करने के लिए। ना पंक्चुअल रहना, ना लॉजिकल लर्न करना, लास्ट में शॉर्टकट देखना, स्टडी मटेरियल ऊपर ऊपर पढ़ना, एंड दिस ऑल रीजंस विल कॉज रिजल्ट फेल्यूर। एंड बेटा फेल होने के बाद ऐसा मुंह बनाते हो ना कि भाई दुनिया पछाड़ दी है, सब कुछ बेरंग है। और फिर मत बोलना कि सर वॉर्न नहीं किया था। और लिख के देता हूं, मेरा सुनोगे, मेरे क्वेश्चन के आंसर्स दोगे। आज तक का रिजल्ट है, कोई भी छोटे सिटी से आने दो, दे पास्ट, दे पास्ट। ओके, सो ध्यान में रखो ये। यस,
And remember, first all attempt is always best attempt. एग्जाम में दे विल मेंशन द मेथड, सो डोंट वरी बेटा। विवेक रुको यार, परपेचुअल इन्वेंटरी मेथड बता दीजिए, फिर पिछला सेशन देख लीजिए। आप लाइन बाय लाइन चल रहे हो तो बेटा जो है थाली में वो खाओ ना। थाली में परोसा है आपको रोटी सब्जी और आप मांग रहे हो भात, राइस दीजिए, चावल दीजिए। जो नहीं चाहिए वो चीजें क्यों बेटा। बहुत बच्चे ना, पेशेंस ही नहीं है, दैट इज ओनली द रीजन। सबसे पहले तो है ना वो मोबाइल को फेंक दो। सबसे पहला, आपको एप्स देखने ना मम्मी के मोबाइल में देखो, रील्स देखना बंद करोगे ना उस दिन लाइफ में आगे तरक्की करोगे। छोड़ो। इलू 2, December 4, क्वांटिटी 900, 50 रुपीज, 45,000। आफ्टर दिस बेटा आई विल गिव यू ब्रेक। 900 इंटू 50, 45,000। 10 December, 400 क्वांटिटी। ओ सॉरी, 5 December है, सॉरी इट्स माई मिस्टेक। 5 December, 500, 50, you have only one rate, 50 rupees, that rate you will consider in the issue. So you left with 450, 20,000. Got the concept? It's nothing difficult in this. At the time of issue, you will consider balance ka rate. Balance ka rate 50. So here you will consider 50. Now next date is 10th December. C. 10th December. So what is 10th December rate beta? Yes, Vidhi. 400 receipt है ना? 400, 55, 22,000. Now listen it carefully. Now what is the total of quantity? First I will take total of quantity. What is the quantity total? 800. Then beta we will do B. B is a total of amount. B is a total of amount. Amount का total is 42,000. And C is equal to B upon A. 42,000 divided by 800. 52.5 is a weighted average rate. Got the concept? So सबसे पहले क्या करना है? You will take quantity का total. You will take amount का total. And amount divided by quantity is a rate. A पे quantity, B पे amount and C is equal to B upon A. Got the concept बेटा? Easy છે? Easy છે?
Easy che. Now you only tell me. Next date is at the time of receipt 11 December. Tell me quantity 355 16,500. Now please use ABC sequence. Receipt में, issue में we will consider the same rate and receipt में we will consider ACB का sequence. चलो बताओ. What is the rate? 800 plus 300 1100, 42,000 plus 16,500, 58,500 and divide by 1100. So rate is 53.1818. Take up to 4 digits. Take up to 4 digits. 4 digits will give you accuracy. 4 digits will give you accuracy. Next date after 11 December, 19 December. 200 और 60. 1300, 70,500, 23076 है. So fifth digit is 5 or more. Fourth digit will be next digit. So पांचवे digit पे fourth digit का भवितव्य डिपेंड करता है पांचवे digit पे. So your answer is 54.23076. So 766 है तो 7 को 8 कर दीजिए. 19 December over. Then you have this December. Issue. Issue is 600. So on Calci you already have that digit. So into 600 you can take 32538 and you left with 700 37962. Take a total of these two, you will get 7500. Last digit 29th December, sorry 20th December, 20th December, 800 800 into 47, 37,600. 50.3747 and 29 December you left with 507 into 500. On Calci you already have that figure. 25,187 and 20 सेशन झालं की करतो. सेशन झालं की करतो. 25,187 is a figure. So 1000 कितना आएगा बेटा? 3747. 3747 लीजिए. सेशन झालं की करतो.
इंटू 1000 इस कितना आएगा? आप लोग ही दिखाइए बेटा आंसर। 1000 इंटू 50.3747, you will get the answer 50378. ठीक है, सो लेट्स चेक द आंसर विथ इंस्टीट्यूट आंसर बेटा। चेक कीजिए, वेटेड एवरेज मेथड 50,377 and I am getting the answer 50,378. So you do the practice in the break. चलो लेट्स टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक कीजिए, लीजिए। You do the practice in the break and beta will come back after 15 minutes. So do the practice and we'll meet at 12:25. चलिए, यस। चिराग ब्रेक ले ले। ये स्लाइड थोड़ा ओपन ही रख, एक 5 मिनट, फिर ब्रेक वाला ले। हाँ। बोला, हाँ, बोला। ओके, हाँ हाँ। रेस्ट नाही टाकलं एकच. आज आज सर सोमवारी माझा फर्स्ट डे वर्किंग असतो, तर उद्या उद्या मी त्याला सांगतो काय आपण समज चर्चा
यस, लेट्स स्टार्ट बेटा। फटाफट फटाफट आ जाइए वापस से। आई होप यू अंडरस्टूड दी FIFO वर्सेस LIFO वर्सेस वेटेड एवरेज. In weighted average method, what we are doing is ABC sequence, SCB sequence in case of receipt. Okay. We'll solve one more question of weighted average. Weighted average ka one more question. We'll solve it. Otherwise, you can do one thing. But today you will take your own time. You can continue with the 11 number, 12 number questions so that you will get everything very clear. And now I'm going to move to next concept, which is we have finished with simple average. In simple average, you will take a average of prices. FIFO method, first in, first out, last in, first out, and weighted average method, ACB. दिया दिव्या, थोड़ा बहुत 19-20 चलता है बेटा. डोंट टेक पॉइंट में डिफरेंस. लास्ट बैलेंस 10-20 रुपए का डिफरेंस इज ओके. 30-40 रुपीज डिफरेंस विल बी देयर बिकॉज राउंडिंग ऑफ डिफरेंस इज ऑलवेज देयर. ठीक है, चलो. नाउ हाउ टू सॉल्व फॉर non-historical methods. Non-historical methods. First method is adjusted selling price. Non-historical methods. Write down beta. It's very important. Non-historical methods. Try to understand. Non-historical methods. C. Messrs XYZ are in the retail business. Following the information are obtained from their records. Goods received from the supplier subject to trade discount 15,75,500. Now you only tell me, first before starting this, there are two ways. Every businessman earns profit. Profit is way one, 20% on cost. Profit is 20% on cost. Cost के ऊपर 20%. Okay. So cost, profit, selling price. 20% on cost. So cost is 100. 20 is profit, 20%, and selling price is 120. And way two, profit is 20% on sales. Cost, profit, selling price, sales 100, 20 profit, 80 cost. So there are two options, way one, way two. 20% on cost, the cost will be 100. And 20% on sales, then beta 100 will be sales. Now tell me, who is answering very fast? Let's check it. Let's check it. अरे बेटा 20-25 रुपए का डिफरेंस ठीक है काजल, मैं 50 बार बोल रहा हूं कि भाई डिफरेंस आएगा, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस होगा. 20-25 रुपए तक बेटा डिफरेंस होने वाला है. 2 डिजिट्स लीजिए, 4 डिजिट्स लीजिए, ठीक है भाई. इंस्टीट्यूट आपके मार्क्स नहीं कट करेगा राउंडिंग ऑफ के. यस. नाउ लेट्स सी. 40% ऑन सेल्स. चलो बताओ, व्हाट विल बी द इक्वेशन? व्हाट विल बी द इक्वेशन? 40% ऑन सेल्स.
40% ऑन सेल्स। अनुषा मैंने बता दिया तुझे, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द इक्वेशन। अभी तू तेरा दिमाग लगाएगी तो मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैंने बोला 20% ऑन कॉस्ट मतलब 100 कॉस्ट, 20 प्रॉफिट, 120 सेलिंग प्राइस। अभी तूने 400 कहां से निकाला तुझे ही पता। प्रीति, अरे बेटा मैंने 4 बार बोला रे बेटा प्रीति। ठीक है चलो कोई बात नहीं। 40% ऑन सेल्स मतलब प्रीति कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। सेल्स के ऊपर 40% मतलब 100, तो प्रॉफिट 40, कॉस्ट 60। बेटा प्रीति थोड़ा दिमाग लगाओ रे। दिया है मैंने, सेल्स को 100 एज्यूम करना है तो कॉस्ट 60 आएगा। अभी तूने लिखा 140 140, क्या बोलूं मैं अभी। चलो छोड़ो। अभी अभी देखो कौन बंदा है। चैत्रा 28.5। अभी क्या 28.5, चलो छोड़ो। इक्वेशन लिखना है उसको भी दिक्कत है। हाउ 28.5 आई डोंट नो। 30% ऑन कॉस्ट, 30% ऑन कॉस्ट, 30% ऑन कॉस्ट। यस जैस्मिन, योर आंसर्स आर विजिबल। कॉस्ट के ऊपर 30% मतलब कॉस्ट 100, 30, 130। कैसे मैथ्स की फैकल्टी आपको पढ़ाती रहेगी, उन्हीं को पता। अभी वापस से किसने बोला? सर प्लीज एक बार एक्सप्लेन कीजिए, सानिया खान। चलो छोड़ो, वापस लेक्चर देखिए जाके। इरिटेटिंग होता है रे ये चीजें कि ये बच्चा बच्चा सॉल्व कर पाता है। 30% ऑन कॉस्ट, 100 कॉस्ट, 30 प्रॉफिट, सेल्स 130। अभी इसमें क्या बोलने का, अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है और आप बोल रहे हो कि हमें सीए करना है, तो कैसे होगा रे यार। देखो कॉस्ट 70 कर दिया विवेक साहू, राजेश कुमार, इतना बताने के बाद भी कॉस्ट का 30%, कॉस्ट को 100 लीजिए, फिर भी इक्वेशन 70 30 100 ये लिख दिया। छोड़ो, जो करना है वो कीजिए। मैंने मेरे साइड से बताया। मैं 4 क्वेश्चंस लूंगा, लास्ट टाइम पूछ रहा हूं। 50% ऑन सेल्स, 50% ऑन सेल्स। अरे बेटा विधि, कॉस्ट के ऊपर 20% तो कॉस्ट को 100 एज्यूम करेंगे, प्रॉफिट को 20 एज्यूम करेंगे, सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा। 20% ऑन सेल्स होगा तो सेल्स को 100 एज्यूम करेंगे, 20 प्रॉफिट होगा, 80 कॉस्ट होगा। कॉस्ट ये हमेशा कम होती है, हम लोग कम प्राइस पे बेचते हैं, कम प्राइस पे खरीदते हैं, ज्यादा प्राइस पे बेचते हैं। 40% ऑन सेल्स मतलब सेल्स 100 रुपए का होगा तो 40 रुपीज प्रॉफिट होगा, तो कॉस्ट मैंने 60 रुपए में माल खरीदी किया होगा। 30% ऑन कॉस्ट में कमा रहा हूं तो 100 रुपए कॉस्ट होगी, 30 रुपीज प्रॉफिट होगा, 130 रुपए पे माल बेचूंगा, जिसके ऊपर परसेंटेज उसको 100 एज्यूम करने का। अभी विधि तू ऐसे क्वेश्चन पूछेगी तो बेटा मैं बाकी बच्चों से क्या उम्मीद करूं। 50% ऑन सेल्स। अभी देखो ये, चलो फाइनली प्रीति ने भी करेक्ट आंसर दिया। 50 50 100, सेल्स को 100, 50 प्रॉफिट, 50 कॉस्ट। ओके छोड़ो। अच्छा विधि बोले मुझे आ गया समझ में। ठीक है भाई, देखो इस तरीके से वी फॉर्म द इक्वेशन। नाउ
One more question. Way 3, write down. 2/3 on cost. कॉस्ट के ऊपर 2/3. यस, एनीवन? कॉस्ट के ऊपर 2/3. 2/3 ऑन कॉस्ट. हाँ बेटा, बेटा, हाँ बेटा. एनीवन? 2/3 on cost. This is way 3, not percentage. It's in digits. 2/3 on cost means 3 is a cost. Profit 2 and 5 sales. So 2/3 on cost, this is the equation. 2/5 on sales. 2/5 on sales. No beta, cost 3, profit 2. And way 4, 1/8 on sales. So 8 sales. 8, 1 profit, 7 cost. So 7 cost. 1/7 on cost. Chalo. Now tell me 3/7 on cost. What will be the equation? 3/7 on cost. Numerator is always profit and denominator is decide. Is cost or sales. So on cost means it's a cost. So what is the equation? 7 cost, 3 profit, 10 sales. 7, 3, 10. और एक 2/9 on sales. 2/9 on sales. 2/9 on sales. So 9 is sales, 2 is profit, 7 is cost. भावेश भाई त्रिपाठी, क्या कर रहे हो यार? कॉस्ट 7 बोलने के बाद भी ऑन कॉस्ट 7, 3, 10. 7 to 9 लिखो ना सिर्फ इक्वेशन. 7 to 9. You can simply write 7 to 9. ये देखो, लिजा रानी राइटिंग 2. हाँ ठीक है, लिजा रानी ने बराबर लिखा. सिंपल लिखो ना लिजा रानी, 7 to 9. विवेक कामत 9 to 11. ठीक है चलो, 9 to 11 लिखा. अभी 9th सेल्स बोलने के बाद भी 9 to 11. फोकस नहीं है, फोकस. लाइफ में जो लोग कॉस्ट और सेल्स नहीं समझ पाते हैं, उनको सीए कहां से बोलूं मैं? प्रॉफिट मार्जिन आर इंपॉर्टेंट. चलो छोड़ो बेटा, डू दिस प्रैक्टिस. नाउ बेटा, हाउ इन एग्जाम क्वेश्चन कम्स 30% on sales is given and total sales is given or cost. They may give you cost of goods sold is 1 lakh or 70,000 या 1,40,000 लेता हूं. 1,40,000 cost is given and you are asked to calculate sales. You are asked to calculate sale. Such questions are given in exam. Cost plus profit is equal to sales. Cost of goods sold plus profit is equal to sales. 30% on sales means 100, 30, 70. COGS 1,40,000. So what is the sales? Cross multiplication. 1,40,000 into 100 upon 70.
So you will get the answer 2 lakhs. आंसर आएगा 2 lakhs. 2 lakhs. So either they will give you ask to calculate sales or they give you to calculate cost. So institute asks you 30% on sales. Okay, equation is given and cost is given. So cross multiplication. One more question. One more question. Jasmine, don't do these half on cost, one third on cost. Simply write and do cross multiplication. It's a simple technique. Don't use other faculties maths technique. Sanket sir knows only cross multiplication. संकेत सर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सिखा देंगे. जिंदगी में कुछ भी करना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. अंजलि इज राइटिंग 130 130. इतना समझाया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सेल्स के ऊपर 30%, तो कॉस्ट 70. नहीं समझेंगे भाई, नहीं समझेंगे. भगवान ही बचाए आपको, भगवान ही बचाए. इतना इजी करके यदि आपको कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स नहीं समझ में आ रहा है ना बेटा, आप भी समझ लो कि सीए कोर्स क्या लेवल का रहेगा. फिर कि आपको सिंपल मार्जिन कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा है. 30% ऑन सेल्स बदले के बाद बच्चा लिख रहा है 130 130. इतना जान डाल के मैं बोल रहा हूं कि सेल्स को 100 एज्यूम करो. सेल्स को इधर 30% ऑन सेल्स मतलब सेल्स 100, 30% ऑन कॉस्ट मतलब कॉस्ट 100. फिर भी नहीं सुनेंगे. अंजलि अपने मन का ही करेगी. छोड़ दीजिए. कितना भी समझाओ वो और फैकल्टी का सुनेंगे. और जो संकेत सर सिंपल वे बता रहे कोई फॉलो नहीं करते. ये 50% स्टूडेंट्स छोड़ देने का. इनके बेटा हम लोग बच के रहते इनसे. अभी अंजलि को क्या समझाऊं मैं, इतने क्वेश्चन लेने के बाद. शी इज आंसरिंग 30% ऑन सेल्स, 100 कॉस्ट कर दिया. अभी क्या समझो इनको बेटा, ये दिमाग ही नहीं लगाते. चलिए लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं. सेल्स 2 lakhs है. यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट 40% ऑन सेल्स. Profit is 40% on sales. You are asked to calculate cost 40% on sales. अभी विवेक मुझे ही पूछ रहा है 30% ऑन कॉस्ट होगा तो क्या. फिर 130 130 आएगा कि नहीं बेटा विवेक. थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ बेटा. ओ प्लीज कीप पेशेंस. बीपी बढ़ाओ मत. शांति. आएगा इनको. दे कैन डू इट. 100 सेल्स, 40 प्रॉफिट, कॉस्ट 60. सेल्स के नीचे लिखेंगे 2 लाख, तो कॉस्ट आएगा आपका 1,20,000. रानी प्रसाद ने सबसे तेज आंसर दिया. विधि बोल रही है पॉइंट में आंसर आ रहा है. क्या बोलने का विधि को, छोड़ो यार. मैं तो इसका अभी क्या इलाज ही नहीं है. 40% ऑन सेल्स. विधि का कहां से पॉइंट में आंसर आ रहा है बेटा. इट्स इरिटेटिंग.
विधि ने पक्का 140 140 लिया रहेगा, और ये 2 लाख का 100 ये विधि ने किया होगा। 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 140 लगाई मुझे। 40% ऑन सेल्स दिया, सेल्स का 40। फिर भी विधि ने इक्वेशन ही करेक्ट फॉर्म नहीं किया। आकांक्षा ये डायरेक्ट हो सकता है, बट बेटा इक्वेशन लिखो। इक्वेशन विल मेक यूर लाइफ इजी। लास्ट क्वेश्चन, आकांक्षा, नाउ यू ओनली टेल मी, 30% on cost is 1,30,000। अभी डायरेक्ट हो सकता है कि आकांक्षा सोच। So what is cost? Tell me the answer of cost. Simple cross multiplication, but we can't do it. देखो लीजा रानी का आंसर वापस गलत। वापस कॉस्ट पे 30%, 130, 130। If sales is 1,30,000, what is a cost? 1 lakh. But Lisa Rani answered 91,000. And सबसे त्रिपाठी जी, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। सेल्स 1,30,000 है और इनका कॉस्ट 1,69,000 आया। शी इज सेलिंग मोर देन द सेलिंग कॉस्ट है उनकी। मतलब 1,69,000 में खरीदा और बेचा 1,30,000 में। सी यूर आंसर। यू बॉट इट एट 1,60,000। बिजनेसमैन है ये। 1,69,000 में खरीदेंगे एंड 1,30,000 में बेचेंगे। वेरी गुड बेटा। दो स्टूडेंट हु आर गेटिंग मोर देन 1,30,000, इनको तो बेटा ये अप्लाई ही नहीं करना है। कहां से आते इतने प्रतिभाशाली लोग कि 169 में खरीद के 1,30,000 में बेच रहे। मतलब इस दुनिया में ऐसे लोग कैसे आ सकते हैं? ये बिजनेस करने के काबिल है। और ये खुद के, जिनको ये खुद ध्यान में नहीं आ रहा है, वो क्लाइंट का क्या अकाउंट्स हैंडल करेंगे? हाउ दे आर गोइंग टू हैंडल द आंसर? पंकज, इन्होंने भी 1,69,000 लिखा एंड यू आर गोइंग टू हैंडल क्लाइंट्स बुक बेटा। क्लाइंट को तो पूरा साफ कर दोगे बेटा आप लोग। माल लाओगे 169 का, बेचने को बोलोगे 1,30,000 में। वाह रे वाह मेरे शेर लोग, क्या बात है। नहीं रे बेटा, दर्द होता है कि इतना सिखाने के बाद भी नहीं आ रहा है। मतलब कैसे स्टूडेंट्स चाहिए? आई वॉन्ट एवरी स्टूडेंट 100% focus on his work. Sir, please explain it once and we will solve any question. This category of students better we want in the class. You develop yourself. You are not using your mind while answering it. See,
Simple cross multiplication I have given to you, but still you can't solve it. दिव्या, तुझे नहीं समझ में आएगा बेटा। एक हाथ फैकल्टी इतना जान लगा के सिंप्लीफाई कर रहा है और फिर भी स्टूडेंट्स ये आंसर दे रहे हैं ना। वो पेन तो तेरे मम्मी पापा का पेन जब तू नहीं सुनती होगी तो वो पेन उन्हीं को पता होगा कि कितना बुरा लगता है। डीमोटिवेशन क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में डीमोटिवेशन होता है आपको? इन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? नहीं बस भाई, मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा ये भी बस। आप आज का सेशन ये वापस देखो। आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन लास्ट में। जयराम जी की बेटा, आई कांट आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस बेटा। भगवान ही बचाए आपको। जो भी स्टूडेंट रॉन्ग आंसर दे रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन इज गिविंग रॉन्ग आंसर। चलिए, कोई बात नहीं। इसकी प्रैक्टिस भी नहीं लगती रे विधि। चलो, लास्ट क्वेश्चन। Goods received from the supplier. Please focus. Now, please focus. 100% focus. 15 lakh 75 500. जब तक आपको डांट नहीं बैठेगी ना बेटा, तब तक आप सीए नहीं हो पाओगे। ये ध्यान में रखना। 15 लाख 75 100 में से 3% डिस्काउंट माइनस कीजिए। माइनस, प्रेस माइनस का बटन। 3% प्लस 11%। How much you are getting on the calci? 169 16 lakh 96,000 3 4 0.85 means 41. So this is my invoice amount. Directly attributable expense, add 87,500. 17 lakh 83,841 is my cost. Sales during the year and selling price of closing stock. Selling price of closing stock. See beta, when my cost of goods sold and my sales price of sales plus closing stock. My cost is 17 lakh 83 841 is my COGS. For example, out of 100 units, I sold 80 units and 20 units. So this is called as goods available for sale. What is called as goods available for sales? 100. And I sold it for, if I sold full goods, it will give me a sales of 24 lakh 80,500. If I sell whole material,
Now my sales is only 22 lakh 45,500. But if I sell whole material, then it will cost me, selling price for me is 24 lakh 80,500. Out of that, this is my cost. Closing stock at selling price is 2,35,000. And I'm asking to calculate closing stock at cost. One more time. Goods available for sale is my cost. If I sold it, now sold means sales plus closing stock. If I fully sell all this material, then what will be my selling price? If closing stock is at selling price, so I can calculate closing stock at cost by using cross multiplication. Cost के नीचे cost. So what is my answer? Take on calci. 2,35,000 divide by 24,80,500 into 17,83,841. Check the answer. You are getting 168,999 means 1,69,000. ICAI is getting 12 rupees ka difference because ICAI is considering only 2 digits and I am considering full cross multiplication. So my answer is very simple. My answer is 1,69,000. एक बार हिंदी में समझ लीजिए. एक बार हिंदी में समझ लीजिए. दिव्या, मैं आपको डांट रहा था क्या? मैं किसको डांट रहा था? मैं जिनके आंसर्स गलत आए उनको डांट रहा हूं. बेटा घर में सपोज 5 लोग रह रहे हैं तो बेटा उसमें से दक्ष गलती कर रहा है तो दक्ष को ही डांटूंगा ना. क्या उसके मम्मी को डांटूंगा? मैं क्या पागल हूं? और मैं तो उसको मम्मी को डांट भी नहीं सकता बेटा, इतना डरता हूं मैं. ओके. देखो बेटा एक बार हिंदी में हमने क्या किया. देखो माल लिया 15,75,500. ये मैंने माल खरीदा. 15,75,500 में से ट्रेड डिस्काउंट 3% को माइनस किया. जीएसटी उसमें ऐड कर दिया 11%. वी विल एज्यूम कि जीएसटी का हमें क्लेम नहीं मिलेगा. वी विल एज्यूम जीएसटी का हमें क्लेम नहीं मिलेगा. आईटीसी इज नॉट अवेलेबल. इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल. फिर उसमें मैंने पैकिंग चार्जेस ऐड कर दिए. तो ये मेरे क्या बोलते हैं इसको? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. क्या बोलते हैं इसको? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल. अभी यदि ये माल पूरा बेच दिया तो पूरा पूरा बेच दिया तो पूरा बेच दिया तो 22,45,500 ये बेचा हुआ. एंड क्लोजिंग स्टॉक की सेल्स प्राइस दी है. क्लोजिंग स्टॉक की सेल्स प्राइस दी है. कितनी है क्लोजिंग स्टॉक की सेल्स प्राइस? 2,35,000. तो ये माल पूरा बेचा होता तो मुझे इतने में मैंने बेचा होता 24,80,500. अभी माल बचा कितने का? 2,35,000 का सेलिंग प्राइस. तो क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट निकालो. क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट निकालो. खत्म है ना. नथिंग इज डिफिकल्ट इन दिस क्वेश्चन बेटा. सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. इलू 7. सेल्स 2 lakhs. Cost of purchase plus opening stock is goods available for sale. Both of this is 2 lakhs. And closing stock at selling price 50,000. Let's check the answer. Goods available for sale
is at cost. What is the cost? 2 lakh plus 0. Opening stock plus purchases. Opening stock plus purchases. Is goods available for sale. Sales including closing stock at selling price. 2 lakh plus 50,000. 2,50,000. What is my closing stock at selling price? Closing stock at selling price 50,000. So what is my at cost? Closing stock at cost is 200 into 50,000 divided by 250. 40,000. Check the answer. 40,000. This is called as adjusted selling price. देखो मेरे पास माल कितना अवेलेबल था? 2 लाख प्लस 0 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस 2 लाख का। यदि ये पूरा माल बेचा होता, पूरा पूरा इंक्लूडिंग क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स मेरा 2 लाख है, पर मैंने क्लोजिंग स्टॉक भी बेच दिया होता तो मुझे 2,50,000 रुपया मिलता था। तो 2,50,000 पूरे 2 लाख का। मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचा है 50,000, तो उसकी कॉस्ट कितनी? तो एट सेलिंग प्राइस पे से एट कॉस्ट सिंपल 40,000। प्रैक्टिस कीजिए आज अच्छे से ये 2 क्वेश्चंस। And finally, you will get the answer. Okay. So why this is called as adjusted selling price? Let's see. Yes, you can read the theory. आप theory को read कीजिए. And in next session, beta, I'm going to explain you this last concept. Solve all TYK questions and perpetual versus this one. Yes, beta. So this will definitely help you in the next session. Okay. So next session is very important. Today's session, please watch it once again. आज हमने जो किया FIFO, LIFO, weighted average and adjusted selling price. 4 methods we have finished with. Next session में बेटा do it properly. So next session में you will enjoy these questions. Thank you. Yes बेटा आज प्रैक्टिस करो, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आज प्रैक्टिस करो, आ जाएगा आपको। 100% गारंटी है कि नेक्स्ट सेशन में बेटा यू विल डेफिनेटली आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। थैंक यू चिराग जी।